Yes, now recording. So instead of representing with un, we represent nth term with f of n here. So f of n is 1 by 2n minus 1. From f of n, we should get f of x value. That is equals to 1 by 2x minus 1, right? And we have to take the integrate with respect to x from 1 to infinity. 1 to infinity f of x dx is equals to integral 1 to infinity 1 by 2x minus 1 into dx. And we know that the formula here, let me write this formula. Integration 1 by x dx is equal to log x. Log x, and there is a denominator that is x coefficient. If it is there, you have to write, otherwise no need to write. So this is becomes 1 by x format it is. So we write it as log of 2x minus 1 by, here x coefficient is what? 2. X coefficient 2, and their limits are from 1 to infinity. This is equal to 1 by 2. We can pull it out. We can take out and apply the infinity. In place of x, if you put infinity, log of 2 into infinity is infinity. Infinity minus 1 is infinity. And log of infinity is also infinity. Upper limit answer is infinity. Upper limit minus lower limit. In place of x, if you put 2, 2 2s are 4. Sorry, 2 into 1. 2 1s are 2. And we know that it is log 1 value is 0. Log 1 is equal to Yes, sir. 0. So what is the answer finally we are getting? Infinity minus 0 is infinity. Infinity by 2 is infinity. So we are getting नहीं our पता answer is what? Infinity, कॉल no? किया था नहीं बस कॉल किया आ रहा है हेलो Hello, what happened? जी सर The given series, infinity means what do you say? It is divergent. That's it. डाइवर्जेंट अगर आपको अदर देन infinity कुछ भी आंसर आया तो कन्वर्जेंट, बस खत्म होता है ये. Integral test is this much only. You want only one question now? Oh yes, this is the simple ही रहता बस. We have to find out nth term. That nth term will be denoted with f of n. From f of n, we should get f of x. And the value of f of x, we have to integrate from 1 to infinity. And if your answer is other than infinity, that is convergent. If it is equal to infinity, that is divergent. This is the only integral test. बस इतना ही है इसमें. ठीक है सर Okay. Let us move on to our regular class. Okay. जी सर हाँ सर So the regular class में अपन, we have to go for one question from Rabi test. Actually, we are searching for that. So let me do one question of Rabi test. Actually, we can't say that we from the beginning only that we are doing with Rabi test. After a few जी steps सर only, you can understand that yes, it is a Rabi test. So let me do one question. I will take little bit tough questions so that in exam also any type of question will come. You should get the idea how to solve those questions. Okay. Yes. Okay, na? हाँ Hello. Yes. जी सर Let me take this question. That is discuss the convergence of the series. Here we have a question is 1 by 3 into x, 1 by 3 into x plus 1 into 2 by 3 into 5 into x square plus 1 into 2 into 3 by 3 into 5 into 7 into x cube plus and so on up to infinity. And it is already mentioned that
It is a series of positive terms of x is greater than 0. ठीक है, let us find out the nth term. बोलिए कैसा find out करेंगे nth term अपन? Solution. Nth term of this given series un is equals to, if I am continuing this series, it will be like this, no? 1 into 2 into 3 and so on. What is the nth term for this one? N, no? वन गल N. एन सर, सॉरी एन। N. जी For जी, मैं वन denominator, गलती से बोल दिया। it is 3 into 5 into 3 इंटू 7. 5 इंटू The 7। arithmetic, it's arithmetic progression series. The first term is 3 and common difference is 2. If you find out, 2, you will get यस the सर। nth term is 2n plus 1. n की 2 value वन 1 प्लस रखिए, 1 you will get 3. n की value 2 रखो 5. n की value 3 रखो 7. 5 And then 7, x, यस। x values are increasing, x power 1, x power 2, x power 3. It means x जी values सर। are increasing, that is x power n. ये आ गया आपका un. एन। अब अपन कौन सा जी करते सर। हैं, ऐसा सीरीज फॉर्मेट में नहीं तो डेफिनेटली एक्स टर्म। अच्छा और एक चीज देखिए, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में कहीं भी एक्स नहीं आता। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहीं फेल ओके हुआ सर। तो देखिए आप, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल होता जी because सर। we are not getting any x values in that series. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हाँ में सर। नहीं आता। So nth term we can find out, n un plus 1 is next term, n will be replaced with n plus 1 and denominator value is also same thing, 3 into 5 into 7. It is continuing, 2n plus 1 is there and we have to write its n plus 1th term. So if we replace n with n plus 1, we are getting 2n plus 3 and here we are getting x to the power of n plus 1. हर एक n को n plus 1 से replace करना है. Now the next step is we have to move on for finding un by un plus 1 value. Correct na? जी सर। So this is 1 into 2 into 3 and so on, n, okay, into x power n is also there. Okay, I will be taking this is in a bracket, it is better. Then it is x power n divided by, please I don't want any disturbance, 3 into 5 into 7 and so on, 2n plus 1 multiplied by the second fraction will become reverse. So when we take the reverse of this one, we are getting 3 into 5 into 7 and so on, 2n plus 1 into 2n plus 3, 2n plus 3, and this is divided by 1 into 2 into 3 and so on, n into n plus 1. But here what I am doing, that x power n I am splitting like this, x power n into x power 1. Can we split like this? जी सर। X power n, first of all this x power n will be cancelled. 1 into 2 into 3 up to n, 1 into 2 into 3 up to n cancel. 3 into 5 into 7 up to 2n plus 1, 3 into 5 into 7 up to 2n plus 1 cancel. तो 2n+3 बाई n इंटू n+1 इंटू x बचा हुआ है। N will be gone already. 1 into 2 into 3 up to n will be gone. हाँ। So what is left? What is un by टू un एन plus प्लस 1? थ्री बाई n+1 इंटू x। Yes, you are correct. Like this, 2n plus 3, 2n plus 3 by n plus 1 into x नहीं लिखे, into x को separately 1 by x ऐसा लिख दो. Okay. ओके सर। Now ओके। we have to apply the limit n tends to infinity on both sides. उससे पहले एक और step कर लेना, take n common. We are getting 2 plus 3 by n. अच्छा, we can call this is equation number 1 also. आगे कहीं जरूरत पड़ सकती है अपनी. Denominator once again n common, 1 plus 1 by n into 1 by x. What happened? Which term is cancelled? This n with this n cancelled. एन। Now जी taking सर। limit n tends to infinity on both sides. Limit
n tends to infinite, un by un plus 1 is equal to other students in your class, how they are, will they understand your professor lectures, or they also want some anything like you are taking the some coaching, then they are also something anywhere they are busy, what they are doing? सर थोड़े बच्चों को तो समझ में आता और जी, थोड़े बच्चे यूट्यूब से भी देख रहे थे। अच्छा, ओके। तो 3 by n 1 by n will become 0. So what is our answer? Our answer is 1 by x. ठीक है, जी सर। 1 by x and this is 2. So that means what do you say? We are getting our answer is finally क्या है? 2 by x है ना? जी सर। So by which test we applied till now? By ratio test, no? जी। By ratio test. बोलो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? If इफ 2 by x 2 by x is less than 1, less than or greater than? ग्रेटर Greater देन, than पहले 1 ग्रेटर था। implies x by 2. X by 2 इज should be लेस देन 1, less than लेस 1, देन 1, which implies x is less than कन्वर्जेस। x is less than 2. Cross multiply, then converges. जी सर। Second line of this statement, if 1 by x less than 1, it means that x by 2 should be strictly greater than 1, implies that x should be greater than 2. Then we say that it is divergent. Okay, if 2 by x is equals to 1, which implies that x is equal to 2. X is equal to 2, what do you say? Test fails. जी सर। Test fails. Abdullah, can you close the door? Abdullah, we can see when x is equal to 2, what happened? ऐसे करें ना अपन, x is equal to 2, what happened जी we सर। can see. So when x is equals to 2, when x is equals to 2, what happened to our problem? कहाँ पे रखते हैं? 1 में substitute करना. So then un by un plus 1 value, it is equals to, when x becomes 2, एक डायरेक्ट स्टेप लिख दो मैं ऐसा, 2n जी plus सर। 3, 2n plus 3 by when x becomes 2, ये हो जाता 2n plus 2. होता नहीं होता? जी सर। यस, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आप देख सकते हैं, कौन सा है? ये है इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन सर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कौन सा रूल लग रहा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स विच रूल? वी शुड अप्लाई रेबी टेस्ट. रेबी अप्लाई टेस्ट। अप्लाई रेबी टेस्ट. अप्लाई रेबीज टेस्ट. मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. तो रेबी टेस्ट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -1 and you have to multiply with n and you have to take limit n tends to infinity and you will reach to your conclusion. So move on to the next page. So our next page will be un by un plus 1 value, it is equals to, अच्छा अपन क्या करेंगे बोलता हूँ, -1 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे. -1 इक्वल्स टू, अब आप चाहे तो प्रीवियस पेज में जाके देख सकते हैं, ये है 2n plus 3 by 2n plus 2. 2n plus 3 by 2n plus 2 minus 1. What happened if you take the LCM and simplify? We are getting here 2n plus 2. This is 2n plus 3. And it is minus 2n. It is minus 2. Plus 2n minus 2n will be cancelling here. This is plus 2n. Minus 2n cancelling here. And then we are getting our answer is what here? 3 minus 2 is 1. 1 by
2n plus 2. So according to the rule of this Rabi test, we have to multiply n on both sides. Un by un plus 1 minus 1 equal to, if you multiply with n, numerator n we will get it. Denominator में से n common भी ले लीजिए. This is 2 plus 2 by n. 2 plus जी सर. 2 by n. What happened again? This n cancelling with this n. Now taking limit n tends to infinity on both sides. Limit n tends to infinite n times un by un plus 1 minus 1. This is equals to limit n tends to infinite 1 over 2 plus 2 by n. Which term is become 0? This term becomes 0, no? 2 by n wala term. This will become 0. We are getting what? 1 by 2. 1 by 2 means less than 1. So therefore, by Rabi test, less than 1 को क्या है? Divergent है ना? By Rabi's test, सर. series divergent. अभी आज देखिए आपने को पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया, आपका पूरे टेस्ट में फिर से करा दिया. सीरीज जी सर. डाइवर्जेंट. तो हेंस आंसर इसका आप कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट. हेंस गिवन सीरीज convergent if यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस में क्या है, तो अपने पास less than 2 convergent, greater than or equal to divergent. If x is less than 2 and divergent if x is greater than में भी है और equal to में भी है. ये हो गया आपका प्रॉब्लम कंप्लीटेड. अंडरस्टूड सर. यस. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आपके बुक में एज इट इज है, देखिए जैसा भी मैं बताया, एवरीथिंग विल बी जी. सेम इन योर बुक. चलिए, मैं तो बुक तो अभी देखा आपकी, पहले तो मैं करा दिया था आपको, बुक तो अब देखा मैं. जी. सही है ना? यस सर. बुक तो आज ही भिजाया आप मेरे को. इससे पहले तो अपनी क्लासेस पहले ही शुरू हो गए. तो एक और टॉपिक रह गया है अपना, और इंशाल्लाह इफ यू वांट टुमारो क्लास, we can have a class, and I will try to finish it. Inshallah we can finish it tomorrow by discussing that Leibniz test and conditionally convergent, absolutely convergent. एक टॉपिक है वो खत्म करके आपका पूरा यूनिट ये खत्म हो जाता है इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. कितने यूनिट में से एग्जाम है? 2 यूनिट है सर. ये सीक्वेंस सीरीज और ये और वो कौन सा, ये जस्ट सेकंड सर. हाइपरबोलिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. तो ठीक है, फिर वो तो अपन एक क्लास में तो नहीं बोल सकते इसको, उसको भी लिमिट्स थ्योरम जी से सर. करने का रहता. डिफरेंशिएशन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा. तो एक यूनिट तो जी कंप्लीट सर. कर सकते हैं इंशाल्लाह. कल मैं आपको हाँ. कंडीशनली कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे कुछ क्वेश्चंस करा के वी कैन फिनिश दिस सेशंस. मतलब यूनिट आपका ओके खत्म सर. हो जाता, फिर रेगुलरली खत्म हो अपन जाता. 1 आवर क्लास भी इनफ हो जाती डेली आप. ठीक है जी ना? सर. जी. तो 4 to 5 का ही रखेंगे मैक्सिमम प्लान. फिर भी मैं अगर कुछ चेंजेस है तो बोलता हूँ. सर कल 2 क्लासेस ले सकते हैं क्या? देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ मैं ट्राई. एक तो पक्का लेता हूँ, दूसरे के क्योंकि बारे में तो. मंडे से मेरे को डेली एग्जाम्स है सर. मंडे से डेली एग्जाम्स है, तो आई डोंट थिंक सो ये हफ्ता क्लासेस रहते हैं. तो नो प्रॉब्लम, मैं कल का शेड्यूल अभी नहीं बोल सकता हूँ. जी तो एक क्लास तो मैं कैसा भी लेता हूँ, कैसा भी. 2 क्लासेस का भी नहीं बोल सर, सकता हूँ कि क्योंकि बोल. 2 ट्राई कर दीजिए, क्योंकि मंडे से फिर थर्सडे तक क्लास नहीं लेता हूँ मैं आपसे. दूसरे सब्जेक्ट्स का कंजिक्यूटिवली एग्जाम्स है सर.
ठीक है, मैक्सिमम 99% आई विल टेक। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, और ठीक है सर। कुछ डाउट है इसमें आपको? क्लियर है ना ये यूनिट? नहीं सर, इसमें तो नहीं है सर। वो जो लास्ट क्लास का पीडीएफ है, आप वो भेज दे सकते हैं? पीडीएफ? पीडीएफ सेव हो नहीं होता, जिसमें सेव करना पड़ता, ऑटोमेटिक सेव नहीं होता। अच्छा, तो लास्ट ऑटोमेटिक क्लास की सेव सेव नहीं है सर? नहीं होता, ऑटोमेटिक सेव सेव करना पड़ता है इसमें। ये जूम मीटिंग है ना, सेव करना पड़ता। मैं नहीं करा सेव जी। इसको। ये रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाती, पर लास्ट क्लास का क्या, अनफॉर्चुनेटली मैं भी देखा भी नहीं। और मैं इधर जल्दी जी में सर। स्टार्ट कर दिया क्लास भी, तो थोड़ा गड़बड़ हो गई। और भी दो स्टूडेंट को ज्वाइन करना था क्लास, मगर वो मैं उन लोगों को भी मैसेज नहीं दे सका, वो भी गड़बड़ हो गई। ओके ठीक है। सर। ठीक है, कर जी ले सर, तो मैं क्लास आपकी इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह सर। ठीक। ओके, राइट, थैंक यू। थैंक यू सर।